टाठो बच्चों तो बच्चों बचुस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल विलगाम की तरफ तुहद अख वस्ताद यम ऑफलाइन क्लास के जरिए बेज अक फिर तह सत शामिल सतमी जमात सुंद हिसाब हेत बहुस यथ क्लासस मज तह वसवन इस्तकबाल करान तुह जानान पतमो कैंसो दोहो पे पारान यमी हिसाबुक अख चैप्टर चैप्टर नंबर 4 यथ नाव छु सिंपल इक्वेशंस अमुक एक्सरसाइज 4.1 परान अमिक सवाल हल करान आज करो क्वेश्चन नंबर 6 युस स्क्रीनस पे साफ पे तुह बोजन आमान यो करो हल बह पर सवाल तम पत वन बह अमुक हल सेट अप एन इक्वेशन in the following cases. Number 1, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmeet's marbles. It is m known as variable. Because Parmeet sind marbles gay sangemarmar piece. Yem chana es pata ki yini mosh m as barabar. Irfanas nish 5 gan zyada marble tem nish yitya Parmeetas nish marble beyi tat jama 7 yani tem alav 7. At es banavın equation. Doyum chu Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. Yine yetçesi y non-variable. Tikezi Lakshmi's age çanas pata. Sunimos y is barabar. Lakshmi's mol şu kunmanzah vor 49 years. तो ये लक्ष्मी सद खुद ज्याद उम्री कुदरती कथा कोता ही इज 4 years older than 3 times Lakshmi's age. ये 3 गुना ज्यादा उम्री लक्ष्मी सद निश बे 4 वरी तथ जमा अत बनावन अस इक्वेशन. तो ब्याक सवाल द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be 1. In a yet zyad khod zyad number hun taadad 87 kam khod kam number hun taadad ak wukash as karun. The teacher tells the class teacher to class maz wana that highest marks obtained by a student in her class, tim sindas class mans yim ladkan sarve khot zyada number ni are twice the lowest marks plus 7. Tim ch dogna tim khot lowest marks o khot be karo ta jama 7. At bani byak equation. Sorim part chimuk sorim sawal. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be b in degrees. Remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees. तो ये तो चेस वुचुन ये तो वन बो गोडनेथ आइसोसेलेस ट्रायंगल गस ट्रायंगल यथ ज साइड आसान छ बराबर कुदरती छ पता ज एंगल ते आसान बराबर आख ज साइड आसान बराबर बेशस कुदरती पत ज एंगल ते आसान बराबर. तो वर्टेक्स सो एंगल सो जाय सुकून यत ज इक्वल साइड रलान. तो यह अमुक जनरल डेफिनेशन
isosceles triangle यह मे तुह लिखमुत ते पत लास्टस पे तो अस वन आमुत कुन सात अत त्रिशवे साइड ते आसान बराबर तेल गई तेल गसान इक्विलेटरल ट्रायंगल मगर जनरल डेफिनेशन अमिच यो कि जो साइड तो जो एंगल अत आसान बराबर यत जो बराबर साइड रलान तथ वनान यह हसा गो वर्टेक्स तो अस क्या करन इन एन isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle यानी युस vertex angle यह दोगन किम खोत base angle खोत अक तो बेग खोत दोगन let the base angle be b in degrees चूंकि base angle छन अस पता यह निमोन अस variables मज अत थो अस यह हसा गो b तो बे remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees बेम यह पार्ट हल करने खतर यह इक्वेशन बनाने खतर स्किल वह दितमुत इशार दितमुत और कि तुह थो सह याद तुह कर सह याद अकि ट्रायंगल हंद यम त्रे एंगल आसान तिहुंद जोड़ सम 160 डिग्री तो अस पको अके करो यम सवाल हल पार्ट हल क्वेश्चन नंबर 6 solution the given cases can be put into the equations as under यानी यम cases इमन बनाओ इस equation इत पट इमन हेको इस equation बनाई इत पट required equation गोडनुकु case अस निमो from the equation it is given that number of permeates marbles here यम आसन मार्बल पीस मार्बल खंज या यम हेकन इत पट किरमस गिंदान किरम बोर्ड्स पे तथ तम पीसेस तथ मार्बल पीसेस हेकन इत पट वट एवर इट इज अस सवाल गरज फ्रॉम द इक्वेशन इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल्स इज इक्वल टू m यह न्यू अस वेरिएबल क्या यह पता कह देन Irfan has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. By equation implies that, means that 5 into number of Parmeet's marbles plus 7. 5 times Parmeet's marbles plus 7. Gai total number of marbles Irfan is having. Irfan is having या Irfan having बराबर यह गल implies that means that 5 into m चूंकि m परमीत से नंबर मार्बल निमत plus 7 is equal to 37 सरी 70 implies that 5m plus 7 is equal to 37 hence the required equation is 5m plus 7 is equal to 37 यानी इत पटन बनाई इक्वेशन तो बे वनो फ्रॉम द इक्वेशन इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल्स इज इक्वल टू m देन Irfan has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet have implies that 5 into number of Parmeet's marbles plus 7 is equal to total number of marbles Irfan is having or Irfan have. So that means 5 into m plus 7 is equal to 37 implies that 5m plus 7 is equal to 37 hence the required equation is 5m plus 7 is equal to 37 you go a part the part pat from the equation it is given that let Lakshmi's age be equal to y years old which is over barabar y variable then Lakshmi's father is 4 years older than 3 times of her age imsin umri khot 4 wari 3 times imsin umri khot 4 wari zyad ak 3 times imsans umar be 4 wari zyad ye kit pat implies that 3 into Lakshmi's age plus 4 so is equal to age of Lakshmi's father
So go means that 3 into y plus 4 is equal to 49, means that 3y plus 4 is equal to 49. Hence the required equation is 3y plus 4 is equal to 49. Third part, from the equation it is given that highest score in the class is equal to 87. So let lowest score be 1. Means that 2 into lowest score plus 1 is equal to highest score in the class. Means that 2 into 1 lowest score plus 7 is equal to 87. Implies that 2 into 1 is 2. 2 plus 7 is equal to 87. Hence the required equation is 2 plus 7 is equal to 87. You go at jawab at parts. The last part, sorim part. From the equation, it is given that the sum of angles of a triangle is 180 degree. Şu clear. Akat 60 degree şu asan. Amuk sum jod tren angle. Let base angle be B. Çünkü orası esmanna amut base angle banıyorsa tu B. B hasa gota base angle. Çünkü şu base angles are unknown. So take B as base angle. Then vertex angle is equal to 2 into base angle. Yani either of the base angles amnesia dogna. Or vertex angle is equal to 2B. Implies that telnemos yelvo poor angle chasnin go B plus B arc vertex angle back vertex angle plus vertex angle nahi arc base angle back base angle plus vertex angle. B bozu agfil arc base angle plus back base angle plus vertex angle. Ati gavye B plus 2B is equal to 180 degree. Yani yim samay sari angle emi triangle hun jod 180 degree chu. So go yim B karavas jama arc B z 4 B go barabar 180 degree. At pattern go, hence the required equation is 4B is equal to 180. Hence the required equation 4B is equal to 180. Or hence the required equation is 4B equal to 180. Ne itpochu ये सवाल हल सपदान तो कुन जाए छुता ख्याल थाउन बिल्कुल गश्न का साइन का एब्रिविएशन का युस जन यथ मंद सिंबल करान इस्तेमाल सो गश्न मिसप्लेस गसन की मे बी प्रिंटस मज अगर कुन सात गुमुत आसि सो हेकु तुय पाने त करेक्ट करित मगर असल कथ युस तुय बार बार ब वनान छुस वकनस पाव याद अंग्रेजी इबारत है कि खतर डिफरेंट मगर युस जन सवाल हल करनुक तरीक सह गि सही आसन तो बेयि यम स्टेप्स साइनस सिंबल्स वगैरह तम गसन सही पट लागन तेली साबक सवाल हल करनुक हक अदा गसान यथ मज वुच ये लोगस ये पता मे पत लोकमुत an isosceles triangle is a triangle with at least two equal sides, or isosceles triangle has both two equal sides and two equal angles. Which मैं तुहंद खतर highlight कोरमुत लोकमुत आतत ताकि तुह रोज़ी जहनस मज तो यत वोन मैं तुह यत ज साइड रलान सो गो vertex angle यानी यत ज equal side रलान isosceles triangle मज सो गो vertex angle तथ opposite यम बे ज साइड आसान तम गई base angle तो ये vertex angle युस सोस दोगन किम खोत कुन ते base angle खोत तो सोई इस्तेमाल करित तो बे ये जानित कि 180 डिग्री आसान ट्रायंगल हंदन त्रेन एंगलन हुन जोड़ तो कोर असी सवाल हल आज तुह सठा बह सपद बे हाजिर तुहंदिस खदमत मज बे सवाल तो तिहंद हल हेत मे बासान आज खतर गो युत सठा वनकस दियो तुह इजाजत
توٚتامَتھ یوٚتانۍ أسۍ اِنشاءاللہ بیٚیہِ سَمکھو تہٕ یِمَن کلاسَن کٔرِو فٲیدٕ تُلنٕچ کوٗشِش کاپیَن کٔرِو اَمہِ خٲطرٕ مینٹین یہِ چھُ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ صاف پٲٹھۍ یِوان بوزنہٕ تہٕ بیٚیہِ میٛٲنۍ آواز سۭتۍ سۭتۍ تۄہہِ اَتھ منٛز رہنمٲیی کران تہٕ بیٚیہِ تھٲیِو پنٛنہِ صحتُک تہِ خیال تہٕ باقیَن ہٕنٛدِ صحتُک تہِ خیال گَرِکٮ۪ن ہٕنٛدِ صحتُک تہِ خیال پانَس منٛز اُبٲرِو اَکھ أکِس مدتھ کرنُک جذبہٕ حالات چھِ تی تقاضہٕ کران اللہ تعالیٰ تھٲینو وارٕ کارٕ تۄہہِ تہِ اَسہِ تہِ بیٚیہِ سَمکھو توٚتام دِیِو اِجازت سٹے ہوم سٹے سیف honor code SOPs stay blessed thank you bye